So in the last class, we were discussing about Palo Alto Firewall, right? And we configured routing. In terms of routing, I have shown you how to configure static routes on Palo Alto Firewall, how to configure OSPF protocol, right? How to configure eBGP or BGP protocol on Palo Alto Firewall. Then we also configured route redistribution, right? We redistributed default route into OSPF protocol, and after that we redistributed BGP routes in OSPF protocol. For that we created redistribution profile and we attached that profile in OSPF, right? हमने क्या किया था, एक redistribution profile create की थी BGP के routes को redistribute करने के लिए OSPF में, और उसको OSPF routing process में attach कर दिया था, right? Today let's move further. Today we will discuss about security policy or security rules, which can be created in Palo Alto Firewall so that you can provide access control. You can define which traffic will be allowed in the network or which traffic will be blocked. Okay, clear. So let's discuss about security policy. So you can write it like this. On Palo Alto Firewall, security policy allows us to enforce allows us to enforce rules and take action according to the requirement. Using security policy, we can define which traffic is allowed through the Palo Alto firewall and which traffic is blocked. Okay, which traffic is blocked. Clear? The policy rules are compared. The policy rules are compared for incoming packets for incoming packets in sequence. And the first rule and the first rule that matches the traffic is applied. Okay, that matches the traffic is applied. Okay, so if you have created a rule for single application, okay, let's say you have created a rule for single application that must you can say precede a rule for all applications if all other traffic related settings are same. Okay, so for traffic that does not match with any user defined rule, the default rules will be applied at that time. Okay, the default rules displayed at the bottom of the security policy rule base. जो Palo Alto firewall में security policy rule base होता है वहाँ पे कुछ default rules भी होते हैं, अभी बताऊंगा आगे. Okay, and these default rules will be used when any you can say any configured rule is not matching with the traffic. Okay, so here you can write it like this: when traffic does not match with any configured rule,
then it matches with the default rules. Default rules are displayed in the end of security policy rule base. Okay, clear. So there are two predefined rules. Okay, there are two predefined rules available in Palo Alto Firewall. Okay, first one is intra-zone default, and second one is inter-zone default. Okay, intra-zone default and inter-zone default. Okay, intra-zone default rule is used to deny, sorry, is used to allow the traffic within security zones. Okay, or between the same security zones. Okay, इंट्रा जोन का मतलब क्या हो गया कि ट्रैफिक जोन के बाहर नहीं जा रहा है, उसी जोन में है, राइट। दो तरीके होते हैं, एक इंटर जोन रूल होता है, एक इंट्रा जोन रूल होता है। इंट्रा जोन कौन से होते हैं? जो विद इन सेम सिक्योरिटी जोन ट्रैफिक को अलाउ करता है बाय डिफॉल्ट। एंड इंटर जोन मींस बिटवीन द सिक्योरिटी जोन। ओके, सो हियर यू कैन से दैट इंटर जोन default rule is used to block or deny the traffic between two or more security zones. Okay, clear. Are you getting this? These are two default rules created. One is intra-zone default, which is used for the same security zone traffic. So it will allow the traffic within security zone. Okay. And interzone default, it is used to block the traffic between two or more security zones. जैसे inside to outside, हमने कुछ security zones create किए थे, right? If I go to the topology, see this is your internal zone, and here we have DMZ zone. This is external zone, right? So by default, there is a rule, okay, on Palo Alto firewall that if the traffic is going from one security zone to another security zone, then it will be blocked by default because there is a rule called inter-zone default, which is denying all the traffic between two or more security zones. Okay. And we have another rule called intra-zone default. वो intra-zone default rule क्या कर रहा है वहां पे? अगर जैसे मान के चलो ये सर्वर भी इंटरनल जोन में होता, फॉर एग्जाम्पल दिस DMZ zone is internal. ओके, ये भी क्या है? इंटरनल जोन है। तो अब ये दोनों सेम जोन हो गए ना, सेम सिक्योरिटी जोन, राइट। सो बिटवीन दीज सेम सिक्योरिटी allowed by default. Okay, but if you are using different security zones, then it is blocked by default. Okay, so this is DMZ. Okay, it's like this. So on Palo Alto firewalls, on Palo Alto firewall, we can configure
multiple security rules to define access control, right? And to create the rules, we can match the traffic based on source and destination, IP address, okay, port number, users, devices, application. Other than this, you can match URL, okay, URL category or URL. You also match based on security zone, source, and destination, security zone. Okay. So to create the rules, we can match the traffic based on source and destination IP, source and destination port number, source and destination users, source and destination devices, applications, URL, source and destination security zone, etc. And we can define action. Here we can define different action. Okay. अब देखो actions कौन कौन से आप define कर सकते हो, right? You can define an action to allow the traffic. जैसे अगर आप कोई भी traffic match करके allow करना चाहते हो, let's say you want to provide internet connectivity, right? So in that case you need to allow the traffic for specific applications or services, right? So that your users can get internet connectivity. In that case you have to define specific actions, right? आप अलाउ कर सकते हो, डिनाई कर सकते हो, ठीक है, रीसेट क्लाइंट कर सकते हो, रीसेट सर्वर कर सकते हो, रीसेट बोथ कर सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको पालो अल्टो फायरवॉल पे। फायरवॉल इज ऑलरेडी रनिंग। लेट्स टेक द एक्सेस। सो here try to log in. It is started. Okay, show interface management. It is 10.11.10. Let's try to access it. So it is giving the GUI of Palo Alto Firewall. So this is the GUI, right? Here we configured all the interfaces and routing, interface management profile, all the things from this network tab, right? Here we configured this virtual router. In this virtual router, we configured OSPF, BGP, static routes, right? All these things we have done. Now, if I talk about security policy, then you have to go to this policies tab, right? In the policies tab here, you will find different types of policies like security policy, net policy, QoS policy, decryption policy, application override policy, right? So for now, I am telling you about this security policy. So here you can see in this security policy, we have two rules, intra-zone default and inter-zone default, right? And this intra-zone default, it is matching any source address, any source user, any source device. Destination is intra-zone, destination zone is intra-zone, means same security zone. Destination address, any device, any application, any service, any. And action is allow. So intra-zone traffic is allowed by default, right? And if you see this inter-zone default rule, it is denying the traffic, deny action is there. So between same security zone, the traffic is allowed by default. Between same security zone interfaces, the traffic is allowed by default, right?
But if I talk about different security zone interfaces, the traffic is denied by default. It is blocked. Okay. अब देखो जैसे आपको कोई नया रूल क्रिएट करना है तो यहाँ पे नीचे एक ऐड का बटन आ रहा है ऐड राइट सो हियर यू विल क्लिक ऑन ऐड and you need to define some information about this rule like its name rule type अब देखो रूल टाइप में क्या होता है यहाँ पे आपको बताना होता है कि आप इंट्रा जोन डिफॉल्ट रूल क्रिएट कर रहे हो ओनली अप्लाई टू ट्रैफिक विद इन वन ऑफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी जोन राइट यही तो लिखा है ओनली अप्लाइज टू ट्रैफिक विद इन वन ऑफ द स्पेसिफाइड जोन देन इंटर जोन डिफॉल्ट अप्लाइज टू ट्रैफिक from any source zone to any destination zone. It does not apply to traffic within a zone, right? Even if the same zone is in the source and in the destination column. तो ये कब यूज होता है जब आपको डिफरेंट सिक्योरिटी जोन के बीच में ट्रैफिक को अलाउ या ब्लॉक करना हो और अगर आप सेम सिक्योरिटी जोन के बीच में ट्रैफिक को अलाउ या ब्लॉक करना चाहते हो तो इंट्रा जोन लोगे अगर यूनिवर्सल ले लोगे यूनिवर्सल देखो यूनिवर्सल के केस में क्या बता रहा है अप्लाइज टू बोथ इंटर जोन एंड इंट्रा जोन ट्रैफिक फिर ये जोन की चिंता नहीं करता राइट इट विल बी मैचिंग द ट्रैफिक regardless of the zone okay कि वो इंटर जोन ट्रैफिक है या इंट्रा जोन ट्रैफिक है इट डजंट मैटर इट विल मैच विद द यूनिवर्सल रूल ओके then you can also define some tag so that you can group the rules by tag ओके कुछ टैग अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा टैग्स का कुछ नहीं होता उनको आप टैग्स को यूज कर सकते हो सो दैट यू कैन यूनिकली आइडेंटिफाई योर रूल्स विच हैव सेम टाइप यू कैन से मान के चलो आपका पालो अल्टो फायरवॉल है उस पे कुछ रूल्स आपने इनसाइड टू आउटसाइड ट्रैफिक के लिए बनाए हैं राइट तो उस उन पर्टिकुलर रूल्स के लिए आप एक टैग बना दो इन टू आउट और जो भी रूल्स आप इनसाइड टू आउटसाइड ट्रैफिक के लिए बनाओगे उस पे वो टैग लगा दो so you will be able to identify that this particular rule is created for the traffic which is coming from inside and going to outside so that you can just identify them uniquely so if you want to group the rules by tag you can do it then here you can give some comment okay उसके बाद देखो क्या है यहाँ पे सोर्स फिर आप यहाँ सोर्स जोन डिफाइन कर सकते हो सोर्स एड्रेस सोर्स यूजर सोर्स डिवाइस ओके देन डेस्टिनेशन जोन डेस्टिनेशन एड्रेस एंड डेस्टिनेशन डिवाइस आफ्टर दैट हियर यू कैन मैच एप्लीकेशन ऐप आईडी हम लोग करेंगे आगे ऐप आईडी दिस इज फॉर सर्विसेज एंड यूआरएल कैटेगरी यहाँ पे आप एच टी टी पी एस जो भी सर्विसेज होती है उनको मैच कर सकते हो और यहाँ से आप यूआरएल कैटेगरी मैच करा सकते हो जैसे अगर आपको मान के चलो यूआरएल फिल्टरिंग करनी है फॉर एग्जांपल यू वांट टू ब्लॉक ऑल द यूआरएल्स व्हिच बिलोंग टू गैम्बलिंग कैटेगरी then you can select that URL category here and you can block the traffic. If you want to block all the social networking URLs in your network, then you can select social networking URL category and you can block all the URL access. Okay. In the end, we have action. अब देखो एक्शन टैब में यहाँ पे एक्शन सेटिंग्स मिलेंगी यहाँ आप एक्शन डिफाइन करते हो ये होते हैं एक्शंस डिनाई अलाउ ड्रॉप फिर रीसेट क्लाइंट रीसेट सर्वर एंड रीसेट सर्वर एंड क्लाइंट बोथ राइट अब देखो अलाउ का मतलब क्या होता है अलाउ मींस अलाउ द मैच ट्रैफिक जो भी ट्रैफिक मैच हुआ है उसको अलाउ कर दो डिनाई का मतलब क्या होता है ब्लॉक द मैच ट्रैफिक एंड enforce the default deny action defined for the application that is denied okay other than this we have drop drop action है drop होता है silently drop कर देना okay a TCP reset is not sent to the host or application unless you select देखो यहाँ drop select करोगे अब इसके बाद आ रहा है send ICMP unreachable तो अगर आप इसको select नहीं करते हो तो Palo Alto Firewall silently drop करता रहेगा पैकेट्स को okay ठीक है और अगर आप डिनाई करोगे डिनाई तो डिनाई के केस में क्या होगा वो ट्रैफिक को ब्लॉक कर देगा और एक टीसीपी रीसेट भेज देगा क्लाइंट एप्लीकेशन के पास ये आपका ट्रैफिक आगे ब्लॉक है कनेक्शन टर्मिनेट कर देगा ये डिफरेंस होता है डिनाई और ड्रॉप में ड्रॉप के केस में कोई भी नोटिफिकेशन क्लाइंट के पास नहीं जाता या कह सकते हो कोई भी टीसीपी रीसेट सेंड नहीं होता बट इन केस ऑफ डिनाई इट विल बी सेंडिंग ए टीसीपी रीसेट ओके देन वी हैव रीसेट क्लाइंट देखो ये रीसेट क्लाइंट ऑप्शन है इट विल सेंड टीसीपी रीसेट टू द सर्वर साइड डिवाइस ओके
रीसेट क्लाइंट, देखो होता क्या है कि जब भी कोई क्लाइंट एक सर्वर को एक्सेस करेगा और बीच में अगर पालो अल्टो फायरवॉल है, वहां पे आपने रीसेट क्लाइंट एक्शन ले रखा है, तो पालो अल्टो फायरवॉल क्या करेगा, उस ट्रैफिक को ब्लॉक कर देगा और क्लाइंट के कनेक्शन को रीसेट कर देगा, मीन्स टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। रीसेट सर्वर अब उल्टा हो जाएगा। इस केस में क्या होगा कि अगर पालो अल्टो फायरवॉल बीच में है और एक क्लाइंट सर्वर को एक्सेस कर रहा है और आपने उसके लिए रीसेट सर्वर एक्शन अप्लाई किया है, तो पालो अल्टो फायरवॉल क्या करेगा, सर्वर साइड के कनेक्शन को रीसेट या टर्मिनेट कर देगा। इट विल नॉट अलाउ कनेक्शन एंड रीसेट क्लाइंट एंड सर्वर, इट मींस सेंड द टीसीपी रीसेट टू क्लाइंट एंड टू द सर्वर बोथ। ओके, जो भी क्लाइंट साइड डिवाइस है, जो भी सर्वर साइड डिवाइस है, दोनों के पास एक एक टीसीपी रीसेट सेंड होगा। क्लियर। आफ्टर दिस हियर यू कैन ऑल्सो डिफाइन लॉगिंग। अब देखो होता है क्या है कि जब भी हम लोग क्या चाहते हैं कि जब भी कोई ट्रैफिक इस सिक्योरिटी पॉलिसीज रूल से मैच करे, तो उसके लिए आपका फायरवॉल एक लॉग जनरेट करना चाहिए सो दैट वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट रूल मैच, राइट, कि वो पर्टिकुलर रूल मैच हुआ था। ठीक है, तो जब भी कोई भी ट्रैफिक किसी भी रूल से मैच करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए लॉगिंग इनेबल कर देते हैं सो दैट वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट इवेंट। ओके, इन द लॉग सेक्शन, इन मॉनिटर सेक्शन। फिर यहाँ पे प्रोफाइल सेटिंग दिखा रहा है आपको, राइट, हियर यू कैन अप्लाई सिक्योरिटी प्रोफाइल्स फॉर डीप पैकेट इंस्पेक्शन। If you want to perform antivirus, vulnerability protection, anti-spyware, URL filtering, file blocking, data filtering, wildfire analysis, then you need to use these security profiles. Okay, security profiles are used for content ID. Okay, security profiles are used for content. After that, we have these other settings. You can schedule this rule when you want to apply it. Okay, यहाँ पे आप शेड्यूल बना सकते हो कि इस रूल को आप कब अप्लाई करना चाहते हो अपने Palo Alto firewall पे। And this is for quality of service, QoS marking. If you want to prioritize this traffic further, then you can do here QoS marking also. Okay, quality of services के लिए। तो इस तरह से हम लोग ये रूल क्रिएट करते हैं, समझ में आ रहा है। तो सर यहाँ एक्शंस क्वेश्चन में, था। यस, सर जो भी यस, आपने बताया कि अगर हमें कोई रूल बनाना है कि कैटेगरी बेस पे ब्लॉकिंग हो जाए, यस, आपने यस, बताया था ना, तो यूआरएल सर कैटेगरी। उसमें, हाँ उसमें जैसे हमारे ऑफिस में होता है कि किसी भी नेटवर्किंग जैसे हमने टाइप करा, या कोई भी हम्म, कुछ भी एक साइट होती है जो सोशल नेटवर्किंग से, सर बहुत सारे ऐप्स भी होते हैं, साइट भी होता है, तो वो फायरवॉल कैसे यस, उसको यस। आइडेंटिफाई करता है कि ये इसी कैटेगरी का है? देखो यूआरएल में क्या होता है, Palo Alto फायरवॉल यूआरएल के कीवर्ड से भी मैच कर सकता है, ठीक है। और डायनेमिक कंटेंट एनालिसिस के थ्रू जो यूआरएल का वेब पेज आता है ना, जी। उस पेज के कंटेंट से भी वेबसाइट को आइडेंटिफाई कर लेता है। जैसे अब फेसबुक है और एक इंस्टाग्राम वेबसाइट है, ओके। लेट्स यस से सर। फेसबुक को पालो अल्टो फायरवॉल ने आइडेंटिफाई कर लिया और जी। इंस्टाग्राम के लिए उसके पास कोई यूआरएल कैटेगरी नहीं है पहले से, तो जी। उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो पालो अल्टो फायरवॉल क्या करेगा, पहले तो उसके कीवर्ड से उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा कि ये ठीक है। कौन सा यूआरएल है पर्टिकुलर, और उसके बाद फिर वो क्या करता है, उसके डायनेमिक कंटेंट एनालिसिस करता है। ठीक है। मतलब उस पर्टिकुलर यूआरएल से जो भी वेब पेज रेस्पॉन्स में आया है, उस वेब पेज के पैटर्न्स को चेक करेगा और वहां से फिर वो यूआरएल को आइडेंटिफाई कर लेता है। ओ। ये यूआरएल के लिए है, ठीक है। ठीक। एप्लीकेशन के लिए थोड़ा अलग होता है, पहले एप्लीकेशन सिग्नेचर्स यूज होते हैं, फिर नॉन प्रोटोकॉल डिकोडर्स यूज होते हैं, फिर ह्यूरिस्टिक्स यूज होते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे अभी। ओके सर। बताऊंगा अभी आगे मैं आपको यूआरएल फिल्टरिंग और एप्लीकेशन फिल्टरिंग दोनों। ओके सर। Yes.